activity which is related with the use of scarce यानी limited resources in order to satisfy our wants, in order to satisfy our wants. तो अभी तक आपने क्या क्या डेफिनेशंस पढ़ा? अभी तक हमने इकोनॉमिक्स का डिफाइन पढ़ा. हु इज़ अ कंज्यूमर, व्हाट इज़ कंजम्पशन, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. अभी तक हमने ये सारे डेफिनेशंस पढ़ लिए. अब व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जो आप कोई इमोशंस के लिए कर रहे हो. सपोज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब एक एग्जांपल देती हूँ. अगर हाउस वाइफ फूड बना के अपने बच्चों को दे रही है, हाउस वाइफ कुक्स फूड फॉर हर चिल्ड्रन, तो उसके लिए क्या उसको पैसे मिल रहे हैं? नहीं मिलेगा. ऑब्वियसली वो अपने किस लिए, लव, अफेक्शन के लिए वो काम वो कर रही है अपने बच्चों के लिए. तो दैट इज़ नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. द एक्टिविटी विच इज़ डन आउट ऑफ इमोशंस सच एज लव, हेट, jealousy और दया भावना, ऑनेस्टी, ऑल these emotions are related to non-economic activity. एक एग्जाम्पल और देती हूँ. अ टीचर टीचिंग हर ओन डॉटर. अगर एक टीचर अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसके लिए क्या उसको ट्यूशन फीस मिलेगा? नहीं मिलेगा. या उसके लिए उसको क्या सैलरी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. तो दिस इज़ डन out of love and affection and so it is known as non economic activity. तो non economic activity आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स? ओके. तो एक्टिविटी दो तरह के होते हैं. वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द अदर इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने चैप्टर नंबर 1 के माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस which arises due to alternative uses of resources. We know that the resources are scarce. Scarce मतलब limited. resources जो है हमारे पास limited है. But human wants are unlimited. Human wants क्या है? Unlimited है. And all the resources have alternative uses. हर रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज़ भी है. मतलब हम या तो ये काम कर सकते हैं या उस रिसोर्स से वो काम कर सकते हैं. अब लेट अस टेक एन एग्जाम्पल and completely explain this economic problem. Okay, suppose you are feeling thirsty and you are in the middle of the road in the market and you have 10 rupees, only 10 rupees with you. अब पानी पीने के लिए उस 10 rupees है. अब thirsty है तो you need to drink water first, that will only quench your thirst. So with that 10 rupee note you have many alternative uses. Suppose you can buy cold drink from it, you can buy a water bottle from it, you can purchase an ice cream from it, you can purchase chocolates from it. So that 10 rupee note has alternative uses. But resources are scarce, you only have that 10 rupee and human wants are unlimited. अब जैसे आपकी इच्छा हुआ, अरे आइसक्रीम देख के कि आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो आपने सोचा प्यास बुझाने के लिए चलो आइसक्रीम ही खा लेते. तो आइसक्रीम तो आपने खा ली, 10 रुपया खर्च लिए. अब तो पैसे आपके पास है नहीं, पर प्यास कितने देर के लिए बुझेगी? सिर्फ फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. थोड़ी देर बाद फिर से आपको प्यास लग जाएगी. अब आपने तो ऑलरेडी वो 10 रुपया खर्च लिया, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो हाउ विल यू ड्रिंक योर वाटर? सो वी से दैट रिसोर्सेज आर स्कार्स and we should utilize it in such a way that there is no wastage, because if we don't utilize it the resources will be end, the resources will be put to an end and you will not have any more resources to produce such things. Okay, so this is economic problem. Got it students? Now the next topic is थ्री डिस्टिंक्ट कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के 3 कॉम्पोनेंट है. द फर्स्ट वन इज़
consumption, the second is production, and the third will be distribution. We have three components: consumption, production एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये कंजम्पशन और प्रोडक्शन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो इनकम जनरेट कर रहे हो, हाउ आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इनटू डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब different factors of production, what are the four factors of production? We already I have told you many times what are the four factors of production. That is, they are land, labor, capital and entrepreneur. अब जो इनकम है इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट करना इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन. सो गॉट इट, द थ्री components of economics: consumption, production and distribution. Now let's move on to the definition of statistics. Now the definition of statistics can be divided into two parts. First, it can be defined as plural sense, and the second, it can be defined as a singular sense. प्लूरल सेंस में इसका डेफिनेशन दूसरा होता है एंड सिंगुलर सेंस में इसका डेफिनेशन दूसरा होता है. अगर क्वेश्चन में आएगा आपको डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, यू कैन राइट एनी ऑफ द डेफिनेशन, बट इफ़ इट इज़ रिटन डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर फॉर्म, तो यू हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन ओनली. And if it is written define statistics in plural form, then you have to write that particular definition only, otherwise you will not get marks for it. Understood, students? Now what do you mean by statistics in plural sense? See, the professor Bowley has given the definition of statistics in plural sense. The definition says that statistics are numerical statements of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. Again, I am repeating. Statistics are numerical statements of facts. मतलब स्टैटिस्टिक्स क्या है? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है. जो आप नंबर्स में कोई स्टेटमेंट फैक्ट का प्रोड्यूस करते हो कि ऐसा होने वाला है, उसको अगर आप नंबर्स में प्रोड्यूस करते हो तो दैट इज़ नोन एज स्टैटिस्टिक्स. किसी भी इंक्वायरी के सामने एक दूसरे का रिलेशंस के साथ अगर आप नंबर्स में कोई भी डाटा को, कोई भी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करोगे, देन दैट इज़ नोन एज स्टैटिस्टिक्स. एंड ये डेफिनेशन किसने दिया था? प्रोफेसर बाउली ने. In the same way, the definition of statistics in a singular form was given by many professors, but the easiest one to learn is the definition given by Croxton and Cowden. Croxton and Cowden. Statistics in singular sense defined by Croxton and Cowden is: statistics may be defined as the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. What did I say? Statistics can be defined as the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. इसका मतलब ये जो आपने 5 स्टेजेस के नाम पढ़े हैं, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. द फर्स्ट वन इज़ कलेक्शन, सेकेंड इज़ प्रेजेंटेशन, थर्ड इज़ एनालिसिस एंड द नेक्स्ट इज़ इंटरप्रिटेशन. तो ये सारे you will be reading this all 4 names in a different chapters as well. We have collection of data, we have presentation of data, we have analysis of data and interpretation of data as 4 different chapters. So here just learn the definition of statistics in a singular sense. Okay students? Okay, that's all for today students. Now I am sending you the notes. Please copy it down in the same register of your microeconomics. Give the name of the chapter and all. I'll be sending you that even. Thank you.